Hello students, today I am going to teach you the third unit of analytical chemistry, that is volumetric analysis. So what is volumetric analysis? The process of finding out the concentration of a substance in solution by reacting it with another solution of known concentration. तो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या लेंगे, दो सॉल्यूशन का रिएक्शन करेंगे. ठीक है, दो सॉल्यूशन का रिएक्शन करेंगे, एक का कॉन्सेंट्रेशन हमको पता रहेगा और हमको दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमको ये चीज़ करनी है. तो सिंपली हम लोग जनरल प्रिंसिपल देखेंगे. जनरल प्रिंसिपल से हमको आइडिया आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का. दिस इज जनरल प्रिंसिपल में एक एग्जाम्पल ले लिया है टाइट्रेशन का. ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया है हमने टाइट्रेशन का. दिस इज़ द ब्यूरेट, दिस इज़ द कॉनिकल फ्लास्क. हमने ब्यूरेट में एसिड ले लिया, सॉरी ब्यूरेट में हम लोगों ने बेस ले लिया विच इज़ NaOH. हमने कॉनिकल फ्लास्क में एसिड ले लिया है. बेस का कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है जो कि है यहाँ पे 0.1 नॉर्मल, और इसमें हमने इंडिकेटर ऐड कर दिया है. ठीक है, सिंपली मैंने एसिड बेस रिएक्शन लिया है. हम लोग एसिड बेस की जगह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज सिंपली अ सेटअप फॉर टाइट्रेशन. तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक एसिड, ठीक है, प्लस मैंने एक ले लिया है बेस. एसिड लिया है हमने HCl. ओके, दिस इज एसिड HCl, और हमने बेस यहाँ पे लिया है NaOH. तो हमने कितना वॉल्यूम लिया है एसिड का, अगर समझो हमने एसिड का वॉल्यूम ले लिया है 20 ml, हमको बेस लग रहा है कुछ 25 ml. ठीक है, बेस हमको कुछ लग रहा है 25 ml, और हमको बेस का कॉन्सेंट्रेशन पता है. ठीक है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है 0.1 नॉर्मल वाला बेस ले लिया है. ठीक है, तो हमको बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, वॉल्यूम भी पता है. हमको एसिड का वॉल्यूम पता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन वी कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl. तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, N1V1 equals to N2V2. This is for HCl and this is for NaOH. ठीक है, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH. हमको नॉर्मेलिटी पता नहीं है इसलिए हम एज इट इज लिख रहे हैं N1. हमको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम है इसका 20. N2 हमको पता है. ठीक है, नॉर्मेलिटी हमको पता है कितना है 0.1, और वॉल्यूम है वॉल्यूम कितना है 25 ml. सो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 0.1 इंटू 25 डिवाइड बाई 20, जो भी आंसर, जैसे इसका आंसर आएगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 0.125 समथिंग. ओके, तो हमको इसका नॉर्मेलिटी मिल गया. किसका नॉर्मेलिटी मिला हमको HCl का नॉर्मेलिटी मिल गया. ठीक है, तो सिंपली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यही चीज़ होती है, हम दो सॉल्यूशन का रिएक्शन करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अनदर रिएक्टिंग स्पीसीज. ओके, दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. दिस इज द सेटअप असेंबली फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ओके, तो इसके हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्यों बोलते हैं, मेन पॉइंट इसका ये है क्योंकि वॉल्यूम मेजरमेंट इट प्लेज द की रोल in the titration. That's why it is called as volumetric analysis. So simply definition, the process of finding out the concentration of a substance in solution by reacting it with another solution of known concentration. This is simply a volumetric analysis. तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पता रहने के लिए हमको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए उसके. तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म तो हमको टाइट्रेशन क्या है ये पता होना चाहिए. तो सिंपली ये इस चीज़ से आपको समझ ही गया होगा कि टाइट्रेशन क्या है. टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है. ठीक है, दिस इज हियर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज NaOH बिकॉज हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है. ठीक है, तो टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट, एडिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट to the known volume of unknown solution. ठीक है, इसका वॉल्यूम पता है, to the known volume of unknown solution until the chemical reaction is just complete. And it is a common laboratory method of quantitative chemical analysis that is used to determine the unknown concentration of the known reactant.
Okay, this is simply the definition of titration. हमको पता चल गया है what is titration. Next important term used in volumetric analysis is the titrant. तो titrant, what is titrant? It is the solution of known concentration. ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे नोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन NaOH है. ठीक है, हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, दैट्स व्हाई इट इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन. इट इज द सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन विच इज एडेड टू द अनदर सोल्यूशन टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड केमिकल स्पीसीज. तो यहाँ पे टाइट्रेंट कौन सा है, यहाँ पे NaOH. ठीक है, it is the solution of known concentration which is added to the another solution to determine the concentration of second chemical species. This is the titrant, or it is also called as titrator. Second, analyte or titrant, don't confuse in titrant and titrant. titrant जो हम ऐड कर रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है. ठीक है, titrant जिस a solution whose concentration is unknown. ऐसा solution जिसका concentration हम unknown है, that is titrant. Here titrant is HCl. Okay, हमको इसका concentration find out करना है, that's why titrant is HCl. Next definition we are going to see is indicator. ओके, इंडिकेटर हम लोगों ने वहाँ एसिड बेस में हम जनरली इंडिकेटर यूज़ करते हैं. फिनोप्थलीन इंडिकेटर मतलब हमको visualization. It's simply indicator is a substance which helps in the visual detection of completion of the reaction in the titration by undergoing a change in its color forming turbidity or ppt. Generally in acid base reaction color change, जैसे हम phenolphthalein indicator use करते हैं, it gives generally a pink color, and here phenolphthalein is a indicator. Okay, and next is end point. What is end point? This is the actual point when the reaction is observed to be complete. Okay, next is equivalence point. This is the point in which the quantity of titrant added is the exact amount necessary for stoichiometric reaction with the analyte or the titrant. These are some important terms used in volumetric analysis. Okay, now just simply volumetric analysis general principles, some important terms used in volumetric analysis. Now steps of titration. We all know what are the different steps of titration. First it is titration or titrometric analysis. Okay, first it's sampling. Second it is titrant preparation. Third it is standard preparation and conversion to a measurable form. Fourth, titrant standardization by titration of an accurately known quantity of standard. Next point, sample preparation and conversion to a measurable form. Next, sample titration with the titrant solution, and last, very important, that is data analysis. Okay, these are some steps involved in the titration. Now we will see the general or the basic criteria or requirements for titration. Okay, so first basic requirement. Basic requirement of titration. These are some basic requirement for titration. First, the titration reaction should have large equilibrium constant. Okay, the titration reaction should have the large equilibrium constant. That is, each addition of the titrant must be completely used up by the analyte. Okay, analyte mean titrant. Okay, titrant, it is also called as analyte. Second, the reaction must be rapid. Second point, the reaction must be rapid. Third, there should be known reaction pattern. Okay, there should be the known reaction pattern between the analyte and titrant. Okay, analyte, that is titrant and titrant. Okay, fourth point,
there should be no side or parallel reaction. There should be no side or parallel reaction, that is, the reaction should be specific with no interference. Okay, the reaction should be specific with no interference. Now, fifth point we will see, the reaction should be quantitative. Sixth, there should be distinct features in some property of the solution when the reaction is complete. Next point, the end point. The end point should coincide with equivalence point. Okay, the end point should be coincide with the equivalence point, and it should be reproducible. Okay, and the last point, the titrants and sample volume or mass must be accurately known. Okay, the titrants and sample volume or mass must be accurately known. These are the general requirement of titration. So this was today's topic. We have seen what is volumetric analysis, general principle of it, then some important terms that is used in volumetric analysis, and different steps of titration and general criteria or general requirements for titration. Okay, thank you.